Hello students, now I am going to deliver last video of class 9th Maths NCERT chapter 2 Polynomial. Students, in this chapter identities are so much important. So I want you to explain the value of identities in detail. Let's start solving. First question, x plus 4, x plus 10. This question same resemble as x plus a into x plus b. Here x a for 4, x for x and 10 for b equals x square. So we also start solving by following this identity x plus a. तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास b will get x square plus 10 plus 4x plus 10 into 4. What you will get? X square plus 14x plus 40. This is your answer. This is your answer. And now second, x plus 8, x minus 10. X minus 10 can be displayed as x plus minus 10 equals x square plus a plus b. 8 plus minus 10 equal 8 minus 10. X plus 8 into minus 10 equals x square. Here it will become minus 2x minus 80. This is your answer. Now I am going to solve third part of this question. In third part, you are given 3x plus 4, 3x minus 5. 3x plus 4, 3x minus 5. 3x plus 4, 3x minus 5. This can be written as 3x plus 4 into 3x plus minus 5 is not equals. Now we will apply this identity mx plus a into nx plus b equal m into n x square plus m into a plus n into b x plus ab. Here m for 3, n for 3, a for 4, b for minus 5. So follow mn 3 into 3 x square plus a plus b. तो a पर 4 plus minus 5. First m into a, m for 3 into 4 plus n into b, n for 3 and b for minus 5. X plus ab, a for 4, b for minus 5. So students solve 3 3 जा 9x square plus 4 3 जा 12 plus minus 15. X plus minus 20 equals 9x square. Minus is greater than 12 absolutely. So we will write minus 3x minus 20. Now this is your answer. Now I am going to solve next question. Y square plus 3 by 2. Y square. This is question number 4. Question number 4. Y square plus 3 by 2. 3 by 2 multiply by y square minus 3 by 2. Now we will compare it with this identity a plus b
into a minus b equal a square minus b square. Here a bar a y square, then we will use y square power 2. Here a bar y square minus b bar 3 by 2 square. It will become y power 4 minus 3 3 ja 9, 3 का square 9, 2 का square 4. This is your answer. Now take photograph. Okay. Now question number 5. 3 minus 2x into 3 plus 2x. Students, here we will apply again a minus b, a plus b equal a square minus b square equals 3 square minus 2x whole square equals 9 minus 2 ka square 4 x square. Now this is your answer, and now I am going to solve next question. Question to evaluate the following products without multiplying directly. We start from first. 103 multiplied by 107. 103 can be written as 100 plus 3 into 100 plus 7 equals 100 square plus 3 plus 7 into 100 plus 3 into 7 equal 2 to 4 zeros plus 7 3 10 or 3 to 10 into 100 1000 plus 21. When we will add, we will get 21 01 1 1121. Now second question. 95 can be written as 100 minus 5, 100 plus minus 5 into, and 96 can be written as 100 plus minus 4. Now use the identity equal 100 square plus minus 5 plus minus 5 minus 4 into 100 plus minus 5 into minus 4 equal 4 zeros plus minus 549 minus 900 plus minus plus. So students, we will get 0 minus 0 0 0 minus 0 0 and 10 minus 9 1, and here remains 9 plus 20 equal 9120. This is your answer. Now I am going to solve third part of this question. According to which 104 multiplied by 96. Students, this is very popular identity. 100 plus 4, 100 minus 4. Both are equal to 104, 100 plus 4, 96, 100 minus 4. Identity becomes a plus b into a minus b equal a square minus b square equals 4 zeros minus 16 equal 84 9,984. This is your answer. Now take photograph. Now students, question number 3. Factorize the following using appropriate identities. First, 9x square plus 6xy plus y square. So we start from first part. 9x square plus
6xy plus y square इक्वल्स 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1y means only y plus y square equals this resemble to the given identity x square plus minus 2xy plus y square equal x plus minus y whole square. Here plus clear that we have to put plus sign between 3x and y plus sign because this sign shows determination of this sign. This is your answer. Now second part resemble a minus b whole square. So 4y square minus 4y plus 1 equals 2y whole square minus 2 into 2y into 1 can be written as with any degree, any power. So here become a square minus 2ab plus b square equals a minus b whole square. A for 2y minus b for 1. This is your answer. Now question number third. Students, very easy. x square minus y square by 100 can be written as x square at first term minus y by 10 whole square at second term resemble to a square minus b square. So we have to use a plus b into a minus b. A for x plus y by 10 and in other bracket x minus y by 10. So students, take photograph. So students, question number 4, expand each of the following using suitable identities. First, x plus 2y plus 4z whole square. Such types of 6 questions we have been able to solve. Start from question number part first. Question number 4 part first. X plus 2y plus 4z whole square. It similar as a plus b plus c whole square equals a square for x square plus b square for 2y square 2 square 4 and y square plus z square. Z square means 4 4 is 16, 4 का square 16 and z square plus 2ab 2 to the 4 xy plus 4 xy plus 2bc 4 to the 8 was 16 yz plus 16 yz plus 2ca 4 to the 8 on the 8 zx. This is your answer. Now part second. In part second we have been given to solve 2x minus y plus z whole square. this can be rewritten as, इसको अगेन आप राइट कर सकते हो प्लस के फॉर्म में. हाउ 2x plus minus y plus z. This will help you a lot for solving such types of questions. Now start solving. Equals a square means 2 का स्क्वायर 4 x square plus b square minus y square plus c square z square plus 2ab 2 into 2x into minus y plus 2bc 2 into minus y into z plus 2ca 2 into z into a for 2x. So students,
equals, it will become 4x square, and square of a negative integer is also positive, so plus y square plus z square, here plus minus minus 2 to the 4 xy 4 xy, and plus minus 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 2yz plus 2 to the 4 zx 4 zx. Now I am going to third part solve. Question number, part number third. In this question we have been given minus 2x starting from negative, minus 2x plus 3y plus 2z whole square. This will be written as, इसे लिखना होगा आपको पॉजिटिव फॉर्म में, माइनस 2x प्लस माइनस 3y प्लस 2z whole square. Now start solving once again. We find a square minus 2x square plus b square minus 3y square plus c square 2z whole square plus 2ab 2 into minus 2x into minus 3y plus 2bc 2 into b for minus 3y into c for 2z plus 2 into c into a for minus 2x. So friends, please find your answer. What will be your answer? Just guess. Square of, if it is negative or positive, is positive. So 2 square 4 x square plus 9y square plus 4 z square, here minus minus plus 2 to the 4 3 is 12 xy, and here plus minus plus gives minus 2 3 is 6 to the 12 yz, and here plus minus 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 2 to the 4 to the 8 zx. This is your answer. So please take photograph so that I can solve other parts. Friends, in part 4 we are given 3a minus 7b minus c whole square. This can be rewritten as 3a plus minus 7b plus minus c whole square. Now start solving by using a plus b plus c whole square identity. Equals a square 3a square b square minus 7b square plus c square minus c square plus 2ab 2 into 3a into minus 7b plus 2bc 2 into b for minus 7b into c for minus c plus 2ca c for minus c and a for 3a. So take your answer very quick way. 3 3 is 9, 9a square plus 7 7 is 49b square plus c square, here plus minus minus plus minus minus, it will become 2 3 is 6 7 is 42 ab plus minus minus plus 2 7 is 14 bc, and here plus minus one time minus becomes negative 2 3 is 6 ca. So this is your answer. And now I am going to next part
Our next part 5, we are given minus 2x, part 5, minus 2x plus 5y minus 3x whole square equal minus 2x plus 5y plus minus 3x. Always use this technique to get rid of sign convention. Equals a square means minus 2x square plus b square means 5y square plus c square means minus 3x square plus 2ab means plus 2 into minus 2x into 5y plus 2bc means plus 2 into b for 5y into c means minus 3x plus 2ca, 2 into c for minus 3x into a for minus 2x. Now solve and get your answer. 2 to the 4, it will give 4x square plus 5y square plus 9x square 25. y square plus it is 2x square plus 5y plus minus 3z. It is probably z. It will become z. It will become z. It will become z. And it will become z. So friends, वहाँ भी जेड माइनस 3x it is right. AB, BC. My mistaken. 25y स्क्वायर Plus 9. 25y स्क्वायर नीचे 5 5 का 25. So 4x square plus 25y square plus 9z square plus minus 2 to the 4 5 ja 20 xy plus minus 2 5 ja 10 3 30 minus 30 yz minus plus 2 to the 4 3 12 zx. This is your answer. Now I am going to solve next part 6th. Part 6th. In part 6 we are given 1 by 4 a minus 1 by 2 b plus 1 whole square. This can be written as 1 by 4a plus minus 1 by 2b plus 1 whole square. Now applying the a plus b plus c whole square identity, b gets a square means 1 by 16 a square plus b square means 1 by 4 b square plus c square means 1 square means 1 plus 2ab means 2 into 1 by 4a into b means minus 1 by 2 b plus 2 bc, b for minus 1 by 2 b into 1 plus 2ca, c for 1 into a for 1 by 4a, 1 by 4a. Thus your answer, students, equals 1 by 16, 1 by
16a square plus 1 by 4 b square, 1 by 4 b square, and here positive negative 2 to the 4, 2 to cancel, it become b by ab by 4 minus 1 by 4 ab, 1 by 4 ab, and here minus plus minus plus minus, it will become B 2 to cancel, only minus b plus 1 by 2a. This is your answer. Take photograph, and now I will solve next question. So students, come to question number 5. Factorize. First part 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16yz 16xz. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इनके स्क्वायर रूट की फॉर्म लेते हैं. तो फर्स्ट है 2x होल स्क्वायर. अभी मुझे साइन बाद में देंगे. 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2 into 2x into 3y माइनस, यहां भी प्लस रखते हैं, 2 into 3y into 4z प्लस 2 into 4z into 2x. सूक्ष्म समय देखते हैं कि यहाँ जो साइन है, साइन कन्वेंशन उसे हमें फॉलो करना हो, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का तो ऑलरेडी पॉजिटिव एग्जिस्ट होता है. यहाँ हमें दिखता है माइनस, यानी कोई एक ही इसमें माइनस है, यहाँ भी माइनस. तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा है जो दोनों जगह मौजूद है. तो यहाँ पे एक्स जेड और यहाँ पर वाई जेड, तो दोनों में से यहाँ केवल जेड मौजूद है. इसीलिए स्टूडेंट्स जो नेगेटिव वो कौन है, जेड है. अगर यस होता तो फर्स्ट टर्म को भी नेगेटिव बना देता. सो यहाँ हम जेड की वैल्यू नेगेटिव में रख लेते हैं. जेड की वैल्यू नेगेटिव में रखते ही सारे इक्वेशन संतुष्ट हो जाते हैं. हम देखते हैं कि यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस माइनस 4z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव में आया. यहाँ पे y 3y पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 4z हो जाएगा नेगेटिव, तो आ जाएगा ये नेगेटिव में आएगा. इसी प्रकार जब थर्ड टर्म हमारा नेगेटिव है और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, तो ये भी आएगा हमारा नेगेटिव में. ये नेगेटिव आ रहा है. सो आंसर क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स? आंसर में लिख लेंगे सीधे 3y प्लस माइनस 3y सॉरी 3x सॉरी 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर. या इसे 2 पार्ट में भी आप राइट कर सकते हैं. 2x प्लस 3y माइनस 4z 2x प्लस 3y माइनस 4z. तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का. और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. तो फर्स्ट प्रोसेस वही करते हैं, सबसे पहले सबको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा √2x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
प्लस यहाँ पे ये 2√2 जेड होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 एक्स इंटू वाई, फिर हम रखेंगे प्लस साइन, प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू है 2√2 जेड प्लस 2 इंटू √2 इंटू जेड एक्स, तो जेड एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू है 2√2 जेड इंटू एक्स की वैल्यू है √2 एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न, फर्स्ट में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव। हमें देखना होगा कि फर्स्ट और थर्ड में कौन कौन है, एक्स और वाई हैं, एक्स और जेड हैं। तो जो कॉमन यहाँ मिल रहे हैं हमको वो कौन है, एक्स हैं, इसलिए वैल्यू किसकी होगी, नेगेटिव। स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आइए फटाफट नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, माइनस माइनस माइनस। आप समझ गए कि अब ये वैल्यू पूरा सेटिस्फाई कर रही है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आया, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, जेड की वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहा। यहाँ जेड एक्स, तो जेड की वैल्यू पॉजिटिव बट एक्स की वैल्यू नेगेटिव, तो आ गया नेगेटिव। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ फटाफट लिख लेते हैं किस फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में, माइनस √2 एक्स प्लस वाई प्लस 2√2 जेड होल स्क्वायर। इसे आप दो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तब वैल्यू होगी सेम, माइनस √2 एक्स प्लस वाई प्लस 2√2 जेड, दूसरे ब्रैकेट में भी सेम रहेगा, माइनस √2 एक्स प्लस वाई प्लस 2√2 जेड। ये हमारा आंसर हो, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट 2x plus 1 whole cube, second 2x plus 1 whole cube, second 2a minus 3b whole cube, third 3a by 2x plus 1 whole cube, and fourth x minus 2 by 3y whole cube. So that we will use here two identities, a plus b whole cube and a minus b whole cube. Start from question number first. 2x plus 1 whole cube equals a cube means 2x cube plus b cube means 1 cube plus 3a square, 3a square into b plus 3ab square plus 3a into b स्क्वायर। आई पावर देखते क्या आता है यहाँ पर, 2 × 4 = 8 एक्स क्यूब, फिर प्लस यहाँ पे 1 आता है, प्लस 2 × 4 3 × 12 एक्स स्क्वायर, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 × 6 1 × 6 एक्स आता है। इसे एक बार डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए, ये आपका आंसर है। तो क्या आएगा, 8 एक्स क्यूब प्लस 12
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। सो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। सॉल्व कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे गिवन है a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा। आइडेंटिटी कीप ऑन लर्निंग। 2a माइनस 3b होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब 2a क्यूब माइनस b क्यूब 3b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू b मीन्स 3b मीन्स 3b माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3ab स्क्वायर a फॉर 2a b फॉर 3b। thus it will come 2 cube 8 a cube minus 27 b cube minus 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 minus 36 ये स्क्वायर b प्लस 3 2 जा 6 3 जा 18 ab डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए तो क्या पाएंगे आप। a को प्राइम मानिए तो 8a क्यूब माइनस 36 a स्क्वायर b प्लस 18ab माइनस 27 b क्यूब। This is your answer. Now part third. In part third, we are given to factorize the cube of 3x 3 by 2 3x by 2 plus 1 whole cube. Applying the identity, we find a cube 3x by 2 whole cube plus b cube means 1 cube plus 3a square 3a square means 3x by 2 whole square into b means 1 plus 3 into a for 3x by 2 इंटू बी स्क्वायर मीन्स 1 होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो हम पाते हैं 3 का क्यूब 27 एक्स का क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है प्लस 3 3 जा 9 3 जा 18 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 3 जा 9 3 27 एक्स बाई 2 का क्यूब 8 प्लस 3 3 जा 9 बाई 2 एक्स। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री के सेट कर लीजिए। देन यू विल गेट 27 बाई 8 एक्स क्यूब प्लस 27 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 9 बाई 2 एक्स प्लस 1 एंड लास्ट a minus b whole cube, fourth part. So students, keep on observing the pattern. X minus 2 by 3 y whole cube equals, नीचे सॉल्व कर लेते हैं, a क्यूब x क्यूब माइनस b क्यूब 2 by 3 y क्यूब
minus 3 into a square means x square into b means 2 by 3 y minus minus plus 3 into a for x into b for 2 upon 3 y स्क्वायर। सो वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, इक्वल्स क्या वैल्यू आते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो क्या आ जाता है 8 बाई 27 वाई क्यूब, यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाता है तो हम पाते हैं 2 एक्स स्क्वायर वाई 2 एक्स स्क्वायर वाई, फिर पाते हैं यहाँ पे 3 एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तब भी हम पाएंगे 2 अपान 3 2 अपान सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 4 आएगा 4 अपान 3 एक्स वाई स्क्वायर। सो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए डिग्री को, पी एक्स को प्राइम मानते हुए, यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 बाई 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8 बाई 27 y cube. So now take photograph. So students, in question number 7, evaluate the following using suitable identities. First part, cube of 99. We have to find cube of 99 without actual multiplying, but we have to use some identity. 99 is same as difference of 100 and 1. 100 minus 1 whole cube. Now this can be compared with a minus b whole cube. The formula is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. Now take value equals 100 cube 2 3 are 6 zeros. 1 2 3 4 5 6 zeros minus 1 minus 3 1 जा 3 2 2 जा 4 zeros plus 3 1 जा 3 2 zeros. Now taking positive together, add them. 1 triple 0 1 triple 0 3 double 0 by adding first and last we get this, and by adding two middle terms we will get 30,000 1 minus 30,001. Now by subtracting we get 10 minus 1 10 minus 1 9 9 minus 0 9 2 minus 0 2, and here 0 minus 0 0, and here 10 minus 3 7, here remains 9. Thus your answer is 97 lakh 9,70,299. Take your answer. Second part, we have to find cube of 102. 100 cube of 102. We know that
102 can be written as the sum of 102 and can be found out without doing actual multiply. 102. A cube 100 cube plus B cube 2 cube plus 3A square 3 into 100 square into B plus 3AB square 3 into 100 into 2 square. This can be obtained very easily. This can be obtained how? 2 3 are 6 zeros after 1 plus 2 cube value 8 plus 3 2 are 6 2 2 are 4 zeros plus 2 2 are 4 3 are 12 double zeros. Now we have to add everything. Immediate 8 0 0 0. Now 2 1 2 6 1 2 to 4 to 6 2 to 4 to 6 यहाँ 0 आएगा 10 और आंसर में भी 10,61,208. Calculate. Now in third part we have to find cube of 998. 998. Students, this can be written as the difference of 1002 whole cube. By applying identity, one can find 1000 cube minus 2 cube minus 3 into a square means 1000 square into b for 2 plus 3 into a for 1000 into b square for 2 square. Now find the value. Equals 3 3 are 9 zeros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus 2 cube 8 minus 3 2 are 6 and 3 2 are 6 zeros. 1 2 3 4 5 6 plus 2 2 are 4 3 are 12 3 zeros. Now find answer in one number. First we have to add first and fourth. 0 0 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then after minus 1 2 3 2 are 6. So this will become 5 9 9 9 9 2 2 to 4 to 6 1 7 2 to 4 to 6 2 to 4 to 6. कैसे? So sorry, same sign will be added.
1 2 3 4 5 6. Now when we will subtract, we will get 10 minus 8 2 9 9 1 1 10 minus 6 4 9. So students, after subtracting you will get, after making commas in proper way, 994,011,992. Now take photograph. And now students, question number 8, factorize each of the following. First part, 8a cube, 8a cube plus b cube plus 12 a square b plus 6 ab square. So students, 8a cube को हम राइट कर सकते हैं 2a होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b square. This will become a cube plus b cube plus 3a square. A cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square. That is a plus b whole square. So 2a plus b whole square. This is your answer. This is your answer. Now second part. In second part we have been given 8a cube minus b cube minus 12a square b plus 6 ab square. So it will become 2a whole cube minus b cube minus 3a square into b plus 3 into a into b square equals a cube minus b cube minus 3a square b plus b plus 3a b square equals a minus b whole cube, a for 2a and b for b. So your answer is 2a minus b whole cube. Part third. We have been given 27 minus 125 a cube minus 135 a plus 225 a square equals 27 means 3 cube minus 125 is a cube of 5 5a whole cube minus 3 into a square into b plus 3 into
into b square equals here a cube minus b cube minus 3a square b plus 3 a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square 3ab square 3 a for 3 and b for 5a. So it will become 3 minus 5a whole cube. This is your answer for third part. Now fourth part. Fourth part 64 a cube 64 a cube minus 27 b cube minus 144 a square b plus 108 ab square. This can be rewritten as 4a whole cube minus 3b whole cube minus 3 into a square into b plus 3 into a into b square equal. This becomes a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square equals a minus b whole cube. A for 4a and b for 3b. Thus your answer is 4a minus 3b whole cube. This is your answer. Now fifth part. In this part we are given 27p cube 27p cube plus 1 by 216 minus 9 by 2 p square plus 1 by 4 p. This can be rewritten as 3p whole cube a cube plus 1 by 6 as b cube minus 3 into a for 3p square into b for 1 by 6 plus 3 into a for 3p into b square for 1 by 6 square equals a cube plus b cube minus a cube minus b cube. यहाँ माइनस साइन है 27p यहाँ माइनस रहेगा. So this is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square equals a minus b whole cube. A for 3p
minus b for 1 by 6 whole cube. Now take photograph. And now friends, question number 9, verify x cube plus y cube equal x plus y in other bracket x square minus xy plus y square. So taking LHS first, LHS LHS सॉल्व कर लेते हैं. क्या है LHS? x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल्स, फ्रेंड्स हम सॉल्व करते हैं, क्या पाते हैं? x प्लस y माइनस 3 xy इन ब्रैकेट x प्लस y. ये हमारी आइडेंटिटी है. इज इक्वल टू, अब यहां दो टर्म है, दो टर्म में x प्लस वाई कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? यहाँ पे यहाँ बचता है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3 xy. सो इक्वल्स फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे x प्लस y एंड इन सेकंड ब्रैकेट x प्लस वाई होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं तो क्या पाते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2xy and this minus 3xy equal in first bracket x plus y in second bracket x square plus y square minus xy equals RHS proved. And same as in this question we will solve part second also taking LHS. लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे है क्या है? we have x cube minus y cube equals in first bracket x minus y whole cube plus 3xy in bracket x minus y. Now in two terms common is x minus y, x minus y. Here remains x minus y whole square plus 3xy equal. Here comes x minus y in first bracket and one we will break the square x square plus y square minus 2xy plus 3xy. It will come in first bracket x minus y in second bracket x square plus y square plus xy equal RHS proved. And students now take photograph. And now friends, question number 10, factorize. First 27y cube plus 125z cube can be written as 3y whole cube plus 5z whole cube
Now applying the previous identity, P will get 3y plus 5z in first bracket and in second bracket a square means 3y square minus ab means 3y into 5z plus 5z whole square equals in first bracket 3y plus 5z in second bracket square of 3y 9y square minus 5 3 15 yz plus 25 z square. This is your answer for first. And now second part, this can be written as 4m cube minus 7n cube equals in first bracket 4m minus 7n and in second 4m square plus 4m into 7n plus 7n square equals in first bracket 4m minus 7n and in second bracket 4 4 16m square plus 28 mn plus 49 n square. This is your answer for second part. And now factorize 27 x cube plus y cube plus z cube minus 9 xyz. This can be written as 3x whole cube, 3x whole cube, marker 3x whole cube, 3x whole cube plus y cube plus z cube minus 3 into a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c minus 3 a b c equal in first bracket a plus b plus c, a for 3x plus b for y, c for z. In other bracket a square means 3 3 a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. So this is your answer students. 3x plus y plus z, here 3 3 9 x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3zx. This is your answer. Now take photograph. And now students, question number 12, verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to half x plus y plus z in another bracket x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. So take LCS x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. This can be written as in first bracket x plus y plus z in other bracket x square plus y square plus z square
minus xy minus yz minus zx. So students, this can be written as x plus y plus z into 1 by 2 into 2, because 1 by 2 into 1 by 2 equal 1. 1 by 2 into 2 x cube x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. And here 1 by 2 can be written in starting 1 by 2 x plus y plus z, 2x square 2x square 2y square 2z square minus 2x y minus 2yz minus 2zx. So students, equal half x plus y plus z, in other x square plus x square plus y square plus x square plus y square minus 2x y plus y square plus z square minus 2yz plus z square plus x square minus 2zx. Thus 1x square, 2x square, 2y square and 2z square. Now students, this can be written as half x plus y plus z in second x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square is equal to R H S. Now take photograph. Now students, in question number 13, it is given that x plus y plus z is equal to 0 and we have to show that x cube plus y cube plus z cube equals 3xyz. So take a left hand side. In left hand side, x cube plus y cube plus z cube. Students, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz plus 3xyz. By adding and subtracting 3xyz, by adding and subtracting 3xyz, 3xyz को सब्ट्रैक्ट किया गया फिर ऐड किया गया. देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैथ में किया जा सकता है. नेक्स्ट, नाउ दिस गिव एन आइडिया ऑफ आइडेंटिटी a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals a plus
माइनस ए प्लस बी प्लस सी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस 3x वाई जेड प्लस 3x वाई जेड. Students, we have been given x plus y plus z equal 0. So write 0 into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx plus 3xyz. So students, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया 0 से तो हम पा जाते हैं क्या मिलता है हमको 0 मिलता है प्लस 3xyz. तो हमें क्या मिलता है इक्वल टू 3xyz इज इक्वल टू राइट हैंड साइड राइट कीजिए प्रूव्ड और लीजिए बराबर फोटोग्राफ. फ्रेंड्स, in question number 12, without actually calculating the cubes, find value of each. Let's try a cube plus b cube plus c cube minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube plus minus 3 into minus 12 into 7 into 5 plus 3 into minus 12 into 7 into 5. So students, यहाँ पे हमने जितना सब्ट्रैक्ट किया था उतना ही मैंने ऐड कर दिया. ऐसा मैथ में किया जा सकता है. So equals a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. तो इतने को हम साथ में लेकर आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं तो पाते हैं इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. तो माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट ये स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 7 minus 7 into 5 minus 5 into minus 12 plus 3 into minus 12 into 7 5 जा 35. 7 5 35 यहाँ आ गया है. इसको यहाँ देखते हैं क्या आ चुका हमारे पास माइनस 12 प्लस 7 5 12. तो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी. अब हमें यहाँ कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इसे पूरे ब्रैकेट को हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. अब हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. माइनस 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी. 0 से मल्टीप्लाई होके 5 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 7 माइनस
7 into 5 minus 5 into minus 12 plus 35 3 plus minus 12 into 105 मल्टीप्लाई करने पर तो इसमें यहाँ पे क्या आ चुका है 0, और जब यहाँ पे 0 आया तो ये पूरा हो गया 0। अब आ चुका है 0 प्लस माइनस माइनस साइन ले जाएगा माइनस का, अब वैल्यू आएगा 12 5 जा 60, 12 1 जा 12। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। और अब सेकंड कर देते हैं। सेकंड भी इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं। हाउ शॉर्ट में लगाते हैं। हियर a प्लस b प्लस c इक्वल 28 प्लस -15 प्लस -13 इक्वल 28 -15 -13 28 -28 equals 0. Since a plus b plus c equals 0, so that a cube plus b cube plus c cube equal 3abc. 3abc. So that 28 cube 28 cube plus -15 cube plus -13 cube equal 3 into 28 into -15 into -13. Let's try 15 8 जा, चलिए प्लस में आएगा, मान में प्लस हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे 3 13 3 जा 39, लेकिन बाद में सॉल्व करते हैं। 3 into 15 8 जा 120, 15 जा 30, 30 12 42 into 13 is equal to 3 into 13 जो 0, 13 जो 26, 13 4 जा 52 52 54 13 जो 0, 13 2 जा 26, 13 4 जा 52 54 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 13 3 5 15 16. So this is your answer. Now take photograph. Now students, in question number 15, give possible expressions for length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. Students, the area of the imaginary rectangle ABCD with length L and breadth B is 25a square minus 35a plus 12. Area equal L into B equal 25a square minus 35a plus 12, or LB equal 25 a square minus, by middle term splitting we get 20 plus 15 a plus 12, or LB equal 25 a square minus 20a minus 15a plus 12, or LB L into B equal, in the first both term we can take 5a as common. Here remains 5 5 ja 25 minus 5 4 ja 20 minus 3 5 ja 15 minus plus minus, or L into B equal
5a minus 4 and into 5a minus 3. Thus L equal 5a minus 4 and B equal 5a minus 3. Answer 5a minus 4 and 5a minus 3. Now answer second. The second question will be solved same. Area equal L into B equal 35y square plus 13y minus 12 or L into B is equal to 35y square plus 18 plus 28 minus 13y by middle term splitting 15 13 डिफरेंस आना चाहिए minus 12 equal 35 or L into B. L into B equal 35y square plus 28y minus 15y minus 12. Now in first term the common is or L into B equal 7y common. 7 5 ja 35, 7 4 ja 28 minus 3 common. 3 5 ja 15 minus minus plus 3 4 ja 12 or L into B equals 5y plus 4 5y plus 4 and 7y minus 3. So L equal 5y plus 4. Answer 5y plus 4 and 7y minus 3. Now take photograph. Now students, in question number 16, what are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volumes are given below? Students, we know that B equal L B H. L B H equal 3x square minus 12x or L into B into H equal, first of all 3x is common in both. Here remains x minus 4 or L into B into H equal 3 into x minus 4. Now length 3, breadth x and height x minus 4. So answer 3x and x minus 4. This is your answer. Now in second, volume is equal to length into breadth into height equal 12 k y square plus 8 ky minus 20 k और length into breadth into height equals k. 4k is common in all, so 4k multiply by 4 3 ja 12, 3y square plus 4 2 ja 8, 2y minus 4 5 ja 20
now length into breadth into height is equal to 4k 3y square plus 5y minus 3y 5 से 15 difference 2 minus 5 or L into B into H equal 4k multiply by 3y common, only y common, y common 3y plus 5 here minus 1 common 3y minus minus plus. So now it is L into B into H equal 4k into 3y plus 5 into y minus 1. So students, your answer is 4k 3y plus 5 and y minus 1. So students, now we will meet in our next video, that will be linear equation.